वेलकम टू झाड़ेश्वर एजुकेशन। आपण माने एही गोटे वीडियो माध्यम रे कंप्यूटर रो ऑल चैप्टर पाई परिबे एवं टोटल एमसीक्यू एही गोटे वीडियो माध्यम पाई परिबे। झाड़ेश्वर एजुकेशन तरफरु मु आपण मानकु कंप्यूटर सब्जेक्ट रो फुल कोर्स प्रोवाइड करिवि। एमसीक्यू बा शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत गुड़ा प्रोवाइड करी जोटा आपण मानक एग्जाम पाई बहुत हेल्पफुल हो। वर्तमान आगक आसुवा एग्जाम आरआई एआरआई अमीन एवं जहाँ भी गवर्नमेंट जॉब अच्छी सब प्रकार जॉब पाई ए कंप्यूटर एमसीक्यूटा आवश्यक। से एग्जाम को आखि आगर रखी मुझे टोटाल कोर्स प्रोवाइड करी। आपण माने मो वीडियो को पूरा देखिए। मु टोटाल 7 ରୁ 8टी वीडियो प्रोवाइड करी। से 8टी वीडियो रे टोटाल पाठ मु कवर करेबी। मु आपन को जते इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी आ जते इम्पोर्टेंट अच्छी टॉपिक रे से सब आपण मान कहबी। आपण माने मो वीडियो को पूरा देखिए जहाँ फल रे एग्जाम टा क्रैक करि परिबे। तो चलतु आरंभ करिबा हमर आज कंप्यूटर टॉपिक। कंप्यूटर आज टॉपिक होची इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मु केतटा फंडामेंटल आपण मान कहि देबी। देखंतु जो माने जानना दी एटा होची मॉनिटर, एटा होची स्कैनर, एटा सीपीयू मान कोन जानचंती कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एटा एग्जाम रे बहुत थर आछि। सीपीयू रो फुल फॉर्म तो आपण मान मन रखंतु सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तापर देखंतु एटा होछि कीबोर्ड, एटा माउस, एटा होछि प्रिंटर। एति की जानि रखिबा निहाते जरूरी। तो यहाँ फंडामेंटल। चलतु मु डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आरंभ करिबा। आज एमसीक्यू बा शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है देखंतु कंप्यूटर इज ए और एन। कंप्यूटर गोटे कौन? तो तार आंसर होचे देखंतु एटा इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तापर देखंतु 2 नंबर क्वेश्चन द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। कंप्यूटर वर्ड केउ लैंग्वेज रु आसी? उत्तर होबो ए 4 लाटिन। मन रखंतु लाटिन। IC is made of IC केउंदिरु तैयारी होची? उत्तर होची ट्रांजिस्टर्स। उत्तर होची एक IC is made of ट्रांजिस्टर्स। तापर देखो 4 नंबर स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्पीड केते? एटा होची 4 माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड्स। तापर देखंतु 5 नंबर टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तार उत्तर होची सेकेंड। टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तार देखंतु
कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म कंप्यूटर कौन करिपरिबो नहीं आंसर होची 3 थिंकिंग तापर देखंतु कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट आर उत्तर होची ऑल ऑफ दीज माने इंटरनल डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस सॉफ्टवेयर ये सब को नहीं कंप्यूटर गठन तो मु आपण मानकु परे कहबी इंटरनल डिवाइस कौन पेरिफेरल डिवाइस कौन सॉफ्टवेयर कौन ए विषय मु परे कहबी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर तो ये बहुत सहज क्वेश्चन एग्जाम में बहुत थर आसुची देखंतु यार उत्तर होची चार्ल्स बाबेज इटा चार्ल्स बाबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर इटा होची चार्ल्स बाबेज आंसर 3 नंबर ताऊ देखो 9 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर मॉडर्न यार उत्तर होबो आलान तुरिंग 4 आलान तुरिंग तो देखो 10 नंबर देखो फास्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज डेस्ट लैंग्वेज आर उत्तर होची एक मशीन फास्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज मशीन लैंग्वेज और देखो 11 नंबर which of the following refers to the fastest biggest and most expensive computer यार उत्तर होची 4 सुपर कंप्यूटर होची फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर तापरे कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन कंप्यूटर साइज कौ जनरेशन रे बहुत बड़ थिला उत्तर होची एक फास्ट जनरेशन कंप्यूटर were based on vacuum tubes फास्ट जनरेशन कंप्यूटर रे vacuum tubes यूज होतिला the earliest calculating device is abacus 2 नंबर एटा होची abacus the earliest calculating device is abacus और देखंतु which language is directly understood by the computer without translation program 15 नंबर क्वेश्चन होची और उत्तर machine language which language is directly understood by the computer without translation program उत्तर होची machine language computer built before the first generation computer was और उत्तर होची इलेक्ट्रोमेकानिकल तब देखो 17 नंबर abacus can perform both 1 and 2 addition and subtraction Pascal line is also done by एडिंग मशीन पास्कल लाइन को एडिंग मशीन बोली जाना जाए तापर देखो हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप किए करथिले उत्तर होची जेएस किलबाई 3 नंबर आंसर उत्तर जेएस किलबाई स्पीड ऑफ
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्पीड केते उत्तर होची नानो सेकेंड तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ उत्तर होची फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर और देखो 22 नंबर फास्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज वर्ल्ड रो फास्ट सुपर कंप्यूटर कौड़ा उत्तर होची क्राई 1 CRAY1 तबरे ए डैश इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस उत्तर होची पर्सनल कंप्यूटर 2 ए डैश इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर 24 फास्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज इंडिया फास्ट कंप्यूटर कौन कौटा 24 यहाँ सिद्धार्थ हूँ फास्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया 25 नंबर चूज द ऑड वन आउट डिजिटल कंप्यूटर मुझे कंप्यूटर केते भाग विभक्त कर साइज अनुसार तो सही जिन मुझे कोई नहीं गोटे चार्ट देदेवी या ऊपर आप देखिए 4 भाग विभक्त कर कंप्यूटर को साइज हिसाब से माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर आ गोटे मेन फ्रेम कंप्यूटर एमती अच्छी मुझे लिस्ट देदेवी ये 26 नंबर which of the following options correctly express the meaning of the term PC PC रो करेक्ट मीनिंग कौन देखो यहाँ हूँ उत्तर पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू individual works with which they can access information from lower systems and increase their personal productivity तापर देखंतु 27 नंबर which of the following is the smallest and fastest computer imitating brain working तार उत्तर होची 2 क्वांटम कंप्यूटर स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग क्वांटम कंप्यूटर यार उत्तर हम आलान तुरिंग 4 आलान तुरिंग तो देखो 10 नंबर देखो फास्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज डेस्ट लैंग्वेज आर उत्तर हूँ एक मशीन फास्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज मशीन लैंग्वेज और देखो 11 नंबर which of the following refers to the fastest biggest and most expensive computer यार उत्तर हूँ 4 सुपर कंप्यूटर हूँ फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर तापर कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन कंप्यूटर साइज कौ जनरेशन रे बहुत बड़ थिला उत्तर हूँ 1 फास्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर
based on first generation computer were based on vacuum tubes. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रे vacuum tubes यूज होतिला. The earliest calculating device is abacus. 2 नंबर एटा होची abacus. The earliest calculating device is abacus. तब देखंतु which language is directly understood by the computer without translation program. 15 नंबर क्वेश्चन होची और उत्तर machine language. Which language is directly understood by the computer without translation program? उत्तर होची machine language. Computer built before the first generation computer was. और उत्तर होची इलेक्ट्रोमेकानिकल. तब देखो 17 नंबर abacus can perform both 1 and 2 addition and subtraction. Pascal line is also done by adding machine. Pascal line को एडिंग मशीन बोली जाना जाए. तब देखो हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप. इंटीग्रेटेड चिप किए करथिले? उत्तर होची JS किलबाय. 3 नंबर आंसर उत्तर JS किलबाय. स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्पीड केते? उत्तर होची नानो सेकेंड. तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ. उत्तर होची फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. तो देखो 22 नंबर फास्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज. वर्ल्ड रो फास्ट सुपर कंप्यूटर कोड़ा? उत्तर होची क्राई 1. CRAY 1. तबरे ए डैश इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस. उत्तर होची पर्सनल कंप्यूटर 2. ए डैश इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर. 24 फास्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज. इंडिया फास्ट कंप्यूटर कौन कौटा? 24 2 यहाँ सिद्धार्थ हूँ फास्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया. 25 नंबर चूज द ऑड वन आउट. डिजिटल कंप्यूटर. मुझे कंप्यूटर केते भाग विभक्त करा साइज अनुसार. तो सही जिन मुझे कोई नहीं गोटे चार्ट देदेवि या ऊपर आप देखिए 4 भाग विभक्त करा कंप्यूटर को साइज हिसाब से. माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आ गोटे मेन फ्रेम कंप्यूटर एमती अच्छी. मुझे लिस्ट देदेवि ये. 26 नंबर which of the following options correctly express the meaning of the term PC. PC रो करेक्ट मीनिंग कौन? देखो यहाँ हूँ उत्तर
Personal computers widely available to individual works with which they can access information from lower systems and increase their personal productivity. तापर देखंतु 27 नंबर, which of the following is the smallest and fastest computer imitating brain working? तार उत्तर होची 2 क्वांटम कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर imitating brain working, क्वांटम कंप्यूटर। 28 नंबर, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, कंप्यूटर बेनिफिट कौन? देखो ये ऑप्शन जाक देती, आंसर होची very fast and can store huge amount of data। तो ये रही तार आंसर। 29 देखो, नेम दी फास्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फास्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ना कौन? 29 आंसर होची एटा UNIVAC। The chip used in computers is made of silicon. The chip used in computers is made of silicon। 31, a desktop computer is also known as PC। A desktop computer is also known as, desktop computer कौन बोली कहा जाए? PC। डेस्कटॉप कंप्यूटर माने CPU मॉनिटर ये सब थी से डेस्कटॉप कंप्यूटर कह जाए। तापर देखो 32 नंबर, ए पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन। ए पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन। और उत्तर होची 1 इंडिविजुअल। तब देखो, ए डैश इज ए लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। कौन कंप्यूटर साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन रे यूज होची? यार उत्तर होची सुपर कंप्यूटर। तापर 34 क्वेश्चन, द फास्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज फोर्ट्रन। द फास्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज फोर्ट्रन। तापर देखो 35 नंबर क्वेश्चन, ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कमांड प्रॉपर्टीज ऑफ, उत्तर यहाँ हो एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। 36 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम? 33 रही, सॉरी 36 आंसर होची ए PDA। यहाँ तापर 36 नंबर, एनालिटिकल इंजिन डेवलप्ड बाय चार्ल्स बाबेज। एनालिटिकल इंजिन डेवलप्ड बाय चार्ल्स बाबेज। ए कंप्यूटर
also known as server computer is mini computer. A computer also known as server computer is mini computer को server computer कहा जाए। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखु। सर्वर कंप्यूटर का कहा जाए, मिनी कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर कहा जाए। 39 द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू एसेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। एटा होची टर्मिनल। तापर देखो 40 नंबर माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। एटा होची उत्तर 2 सिस्टम यूनिट, इनपुट और आउटपुट और मेमोरी। तो क्वेश्चन कौन? माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। माइक्रो कंप्यूटर क्या नहीं गठित? तो तार उत्तर आप जानले सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। तब देखो 41 नंबर टैबलेट पीसी इज ए टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। टैबलेट पीसी इज ए टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। Which of the following is the fastest type of computer? Supercomputer. Which of the following is the fastest type of computer? Supercomputer. तब देखु 43 नंबर एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ continuous electrical poles. Laptops are portable, lightweight and fit into briefcases. तब देखो the first computer which provides storage is EDSSC. A typical modern computer uses LSI chips. The period of the second generation computer was second generation computer केउ मसरे यूज होता तो हूँ यहाँ 1956 रु 63। तब देखो तू ENIAC was an electronic digital computer. ENIAC was मान कौन an electronic digital computer. Palm top computer is also known as handheld computer. Palm top computer माने हाथ जोड़ा धरिक जोड़ा यूज करुचो मोबाइल ए सब एटा को हैंडहेल्ड कंप्यूटर कहा जाए। डैश इज नॉट ए माइक्रो कंप्यूटर। ए भीतर माइक्रो कंप्यूटर कोटा नुहे मेन फ्राम कंप्यूटर होची माइक्रो कंप्यूटर नुहे। तब देखो जनरल पर्पज कंप्यूटर आर यूज फॉर। जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन पे यूज करा जाए और उत्तर होची ऑल ऑफ दिस। क्रिएटिंग ए स्मॉल डाटाबेस, परफॉर्म्स कैलकुलेशन, अकाउंटिंग ए सब पे व्यवहार करा जाए। तेणु उत्तर होची 4।
देखो तापर which is not the example of special purpose computer special purpose computer एग्जांपल कौटा नुहे उत्तर हम वर्ड प्रोसेसर तापर 53 नंबर देखो डैश इज नॉट एन ई कॉमर्स एप्लिकेशन इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉय computer basic architecture was developed by John von Neumann. Computer basic architecture was developed by John von Neumann. In production of IC chip of computer, what is needed in the following? In production of IC chips of computer, what needed in the following? IC chip जोड़ा तैयार होउची प्रोडक्शन पाई तो कौन आवश्यक और उत्तर होउची सिलिकॉन आईसी चिपटा सिलिकॉन द्वारा तैयारी करा जाए। फास्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज इंडिया रो फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन परम होउची इंडिया रो फास्ट सुपर कंप्यूटर। देखो 57 नंबर computers that are portable and convenient to use for users who travel are known as laptops हला उत्तर हो laptops computers that are portable and convenient to use for users who travel जतरा वाला मैं कोडा नहीं जाऊँ लैपटॉप को आंसर लैपटॉप। Which was the first electronic computer constructed at the Moore School of Engineering? Moore School of Engineering School रे कौटा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज होइतिला तो उत्तर होउची एक EDVAC। तापर देखंतु which of the following is generally costlier? उत्तर होउची मेन फ्रेम कंप्यूटर एटा बहुत कॉस्टली। लास्ट क्वेश्चन देखंतु डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज डेस्कटॉप आउ पर्सनल कंप्यूटर कौन बोल कह जाए माइक्रो कंप्यूटर्स या माइक्रो कंप्यूटर कह जाए डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को। तो मु आपण मानकु एई फर्स्ट चैप्टर रे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विषय रे 60टी क्वेश्चन प्रोवाइड करुच्ची जोटा बहुत इंपोर्टेंट आपण मानक एमती गोटे गोटे करी समस्त पाठर शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करी। देखंतु मु आपण मानकु एई फर्स्ट चैप्टर रो गोटे इंपोर्टेंट जिनस कहबी जोटा कि एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो पूरा इंपोर्टेंट। देखंतु कंप्यूटर को साइज अनुसार माने बेस्ट ऑन साइज कंप्यूटर रो साइज को देखिए 4 भाग विभक्त करा जायछि माइक्रो कंप्यूटर तापर मेन फ्रेम कंप्यूटर तापर होजी मिनी कंप्यूटर आ गोटे हूँ सुपर कंप्यूटर या 4 भाग विभक्त करा जायछि। तो देखंतु फास्ट हूँ माइक्रो कंप्यूटर कौन माइक्रो कंप्यूटर्स आर द लीस्ट पावरफुल येट द मोस्ट वाइडली यूज एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल कंप्यूटर। तो या खाली आपण माने पढ़ंतु एटा ग्यारंटी माने एग्जाम रे आसीबो। माइक्रो कंप्यूटर कौन बोली कह जाए पोर्टेबल कंप्यूटर बोली मध्य कह जाए। तो देखो माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर क्या को नहीं कि गठन होती देखो फिजिकल इक्विपमेंट हूँ सिस्टम यूनिट इनपुट और आउटपुट
एवं मेमोरी ये तीन जिनस को लेकिन माइक्रो कंप्यूटर तैयारी। देखो माइक्रो कंप्यूटर क्या कहुए डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर यहाँ हूँ गोटे माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर माने आप ऑनलाइन सेंटर को देखिपारे जो सीपीयू मॉनिटर रखाई थाए से सबको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहुए बा पर्सनल कंप्यूटर। तापर नोटबुक कंप्यूटर यहाँ हूँ माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ हूँ पोर्टेबल लाइट वेट फिट इनटू मोस्ट ब्रीफ केस माने बैग में रखी हम। तो जानले माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर हूँ माइक्रो कंप्यूटर नोटबुक भी माइक्रो कंप्यूटर। तापर देखु हैंडल्ड कंप्यूटर्स और पाम टॉप्स जोटा हाथ धरी हम सेटा भी माइक्रो कंप्यूटर। आपको पाम टॉप बा पीडीएफ मध्य कहुए। फोन बुक्स आउ कैलेंडर्स ये सब हूँ। देखो टैबलेट कंप्यूटर भी हूँ गोटे माइक्रो कंप्यूटर सॉरी हाँ माइक्रो कंप्यूटर। तापर स्मार्टफोन्स स्मार्टफोन जाक भी हूँ माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ हूँ माइक्रो कंप्यूटर। तापर मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कंप्यूटर की लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर ये हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर जोटा कि बिजनेस वर्ल्ड में यूज कर। मिनी कंप्यूटर हूँ स्मॉलर इन साइज फास्टर कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर रू टिके कम दाम ये मिनी कंप्यूटर। यहाँ लाइक इंजीनियर आउ कंप्यूटर एड डिजाइन काम करा जाए। या सर्वर मध्य कहुए। तापर सुपर कंप्यूटरटा हूँ मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन एटा हाई प्रोसेसिंग स्पीड हम अलग कंप्यूटर रो। तापर द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर आर फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर स्पीड की कौन कहे फ्लॉप्स आर फ्लॉप्स रो फुल फॉर्म हूँ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। यहाँ इंपोर्टेंट आपण मैंने मन रखु। तो सुपर कंप्यूटर को गोटे यूज करा जाए वेदर फॉरेस्टिंग न्यूक्लियर रिसर्च मिलिटरी एजेंसी साइंटिफिक रिसर्च लैबोरेटरी यही जगह ये सुपर कंप्यूटर यूज करा जाए। सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल लार्ज इन साइज एंड मेमोरी कंपेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर। तो यहाँ है इतके इंपोर्टेंट जिनस। तो मु आपण मानकु आउ गोटे वीडियो नेक्स्ट चैप्टर विषय में पढ़ेबी। आपण माने ये वीडियो को देखी देखी खातार एक क्वेश्चन आंसर नोट करंतु आउ प्रैक्टिस करंतु। धन्यवाद। वेलकम टू झाड़ेश्वर एजुकेशन। आज आम कंप्यूटर सेकेंड चैप्टर बा कंप्यूटर आर्किटेक्चर विषय रे पढ़िबा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर माने कौन द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड द रिलेशंस माने कंप्यूटर को पार्ट को नहीं गठित एवं ताको मध्य संपर्क कौन सेटा होची कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो सही विषय आज आम पढ़ा। भिडियोटी को पूरा देखंतु कहीं मु बर्तमान किछि हिंट्स देगी तापर एमसीक्यू स्टार्ट करी बा शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करी। तो मु एबे जहाँ जहाँ कहबी सेटा बहुत इम्पोर्टेंट कहीं एग्जाम रे जो गुड़ाक आसूची से गुड़ाक ही मु इम्पोर्टेंस देकी कहूँ। आपण जदि किछि शिखिबार अछि ताहेले वीडियो को मिस करंतु नहीं, वीडियो को पूरा देखंतु। तो फास्ट आम जानिबा कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर कहा कहा को लेकिन गठित देखंतु। फास्ट जिनस है इनपुट और आउटपुट यूनिट, तापर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तापर मेमोरी यूनिट।
यही तीन जिनिस को नहीं कंप्यूटर गठन होती। तो मुझे आपण को डिटेल्स रे कहबी। मु सिंपल वर्ड रे कहूँ इनपुट माने कौन एवं आउटपुट माने कौन। देखो इनपुट माने हूँ जहाँ माध्यम आम एंट्री करवा डाटा। तो देखो यहाँ हूँ कीबोर्ड। कीबोर्ड रे आम टाइपिंग करुचु बा माउस धरिक आम स्क्रॉल करुचु किंबा एपट सेपट करुचु। तो एथिर जानिबा कथा जे इनपुट माने हूँ कीबोर्ड एवं माउस एवं जहाँ द्वारा आम एंट्री करुचु सेटा हूँ इनपुट। तो कीबोर्ड हूँ इनपुट एवं माउस मध्य हूँ इनपुट। देखो आम जदि एबे एट लिखा शिवराज शिवराज ना आम मन कर टाइपिंग करवा। टाइपिंग कले कौन हे ना सीपीयू रे प्रोसेस होगी रिजल्ट कौट देखेब। रिजल्ट देखेब ए मॉनिटर रे ये शिवराज बोलिकी देखेब। तो जोटा रिजल्ट देखेला यहाँ हूँ आउटपुट। तो जानिले मॉनिटर हूँ गोटे आउटपुट। आउ जेरॉक्स मशीन किंबा प्रिंटर सेठी मध्य हमरो कॉपी बाहर तो सेटा मध्य गोटे आउटपुट। तापर देखो आउटपुट कौन स्पीकर। स्पीकर जोड़ा होती सेठी भी गीत बाजुची तो सही स्पीकर मध्य होची आउटपुट। तो आपण माने इनपुट कौन आउ आउटपुट कौन जानी पारले। जहाँ जोटी आम एंट्री करुचु बा इनपुट करुचु जहाँ माध्यम से हूँ इनपुट आ जो आम रिजल्ट पाचु से हूँ आउटपुट। ये देखा तो यहाँ हूँ आउटपुट। मॉनिटर प्रिंटर बॉक्स यही सब हूँ आउटपुट। देखंतु सीपीयू तीनटा प्रोसेस रे काम करुची। गोटे हूँ एएलयू माने हूँ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेकंड हूँ सीयू बा कंट्रोल यूनिट। 3 नंबर हूँ एमयू बा मेमोरी यूनिट। देखंतु आपण माने मन रखंतु एएलयू रो फुल फॉर्म आसी पारे सीयू रो फुल फॉर्म आसी पारे एवं एमयू रो फुल फॉर्म मध्ये आसी परिबो। तो सीपीयू तीनटी प्रोसेस को नहीं काम करुची। तो फास्ट मुझे आपको कहूँ देखो एएलयू बा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यार काम कौन ना एएलयूटा अर्थमेटिक माने एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एपरी काम करिवो। आ लॉजिकल यूनिट माने होची लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ये सब जहाँ अच्छी ये सब काम करिवो। तापर देखंतु सीयू माने होची कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट माने होची डिवाइस। डिवाइस माने को गोड़ा ना कीबोर्ड माउस प्रिंटर बॉक्स मॉनिटर ये सब डिवाइस को कंट्रोल करे। माने जो एक्सटर्नल डिवाइस माने बाहर जोड़ा देखा जाउची मॉनिटर प्रिंटर ये सब देखा जाउची तो ये सब जिनस को माउस कीबोर्ड ये सब को से कंट्रोल करे। एक्सटर्नल डिवाइस को सीयू कंट्रोल करे। तो आपण माने बुझी पड़ले सीयू रो काम कोन। तापर आमे पढ़िबा एमयू मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट माने होची इंटरनल डिवाइस। सीपीयू मध्य थिबा इंटरनल डिवाइस माने प्रोसेसर राम रोम ए सब मेमोरी सहित जहाँ रिलेटेड अच्छी से हूँ मेमोरी यूनिट बा इंटरनल डिवाइस। तो यही मेमोरी यूनिटा सब इंटरनल डिवाइस को कंट्रोल करे मेमोरी गुड़ा को कंट्रोल करे। मेमोरी यूनिट रो मु केतक इंपोर्टेंट जिनस कहूँ जोटा कि एग्जाम रे आसीबो से गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट। देखंतु मेमोरी यूनिट को 2 बार विभक्त करा जायछि प्राइमरी मेमोरी आउ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी माने कोन देखंतु प्राइमरी मेमोरी माने होजी मेन मेमोरी जोटा कि राम आउ रोम। राम माने होची रैंडम एक्सेस मेमोरी
आ रोम मान होची रीड ओनली मेमोरी। एगुड़ाक पूरा इंपोर्टेंट अटे। राम रो फुल फॉर्म पचारि पारे, रोम रो फुल फॉर्म पचारि पारे। तो आपण ठीक से देखंतु ए जिनस खाता नोट करंतु। राम मान होची रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मान होची रीड ओनली मेमोरी। तापर देखंतु राम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राम देखंतु राम इज ए भोलाटाइल मेमोरी। भोलाटाइल माने जोटा लिभि जीव डिलीट हो जीव। तो राम गोटे की मेमोरी कहले आपण कोन कहबे भोलाटाइल मेमोरी। भोलाटाइल बा जोटा कि डिलीट हो जीव भोलाटाइल। तापर राम को मध्य दुई बार विभक्त करा जायछि एस राम आउ डी राम। एटार मध्य फुल फॉर्म आसी पारे। एस राम माने कोन तार फुल फॉर्म कोन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आउ डी राम माने डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दुई प्रकार राम अच्छी। यार फुल फॉर्म मध्य परीक्षा आसी पारे। तो आपण खातार आको नोट करंतु। तापर देखंतु रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी माने होउची जोटा परमानेंट स्टोर होगी रहिबो। परमानेंट स्टोरेज एटा सेटा होची टेम्पोरारी। राउंडटा होची टेम्पोरारी, एई रोमटा होची परमानेंट मेमोरी। तो देखंतु रोम होची नॉन वोलाटाइल मेमोरी माने एटा डिलीट हेबो नाही। इट कैन ओनली बी रीड नॉट रिटन। एटा आगरु लेखा आइथिबो तो आमे पढ़ी परिबा, एठी आमे लिखि परिबा नाही। तो रोम रे कोन रोमटा होची परमानेंट मेमोरी। एठी आगरु लेखा आइथिबो आमे खाली पढ़ी परिबा नॉट रिटन। तो आमे रोम रे लिखि परिबा नाही। देखंतु रोम को सेमति तीन बार विभक्त करा जायछि PROM EPROM EEPROM। रोम को तीन बार विभक्त करा जायछि। एटार मध्ये फुल फॉर्म आसी पारे। PROM माने प्रोग्रामेबल रोम, EEPROM बोले इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, आउ EEPROM माने इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो जानी पारले प्राइमरी मेमोरी माने होची राम आउ रोम। सेकेंडरी मेमोरी बोले होची सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी मध्ये कहा जाए। ऑक्सिलरी मेमोरी तो या भितर किए जाउची हार्ड डिस्क, CD, DVD, EDC। बर्तमान आमे क्वेश्चन आंसर आरंभ करिबा। एइरा मु आपन किछि फंडामेंटल कहली। चलंतु आरंभ करिबा हमरो फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रे कोन लिखा है व्हिच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। एई चारिटा मध्यरु इंटीग्रल पार्ट कोटा नुहे। तो यार आंसर होबो 4 यूपीएस। यूपीएस यार गोटे कंप्यूटर गोटे पार्ट नुहे। तापर चलंतु 2 नंबर क्वेश्चन को। On the motherboard, the connection points for chips are referred to as। यार उत्तर कौन सॉकेट्स। सॉकेट्स द्वारा कनेक्शन होइथिबो। तापर 3 नंबर होची इंटरनल मेमोरी इन ए CPU इज नथिंग बट। इंटरनल मेमोरी इन ए CPU इज नथिंग बट तार कारण कौन। ये ऑप्शन कोडा हबो एटा हबो एक ए सेट ऑफ रजिस्टर्स। तापर देखंतु 4 नंबर माइक्रोप्रोसेसर्स कैन बी यूज्ड टू मेक। माइक्रोप्रोसेसर्स कैन बी यूज्ड टू मेक। यार उत्तर होबो ऑल ऑफ दिस कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर्स। तापर देखंतु 5 नंबर
The load instruction is mostly used to designate a transfer from memory to a processor register known as question आउ थोर कहि दउजी the load instruction is mostly used to designate a transfer from memory to a processor register known as देखो कौन हम 5 नंबर उत्तर होची एक्युमुलेटर उत्तर होची एक्युमुलेटर तापर देखो 6 नंबर the word computer usually refers to the central processing unit plus external memory. The word computer usually refers to the central processing unit plus external memory. एटा एग्जाम रे आस्थिला गत थर तो आपण ध्यान सहित पढ़ंतु तापर देखंतु 7 नंबर क्वेश्चन which of the following is a part of central processing unit central processing unit रो पार्ट कोटा पचारची 7 नंबर उत्तर होची 4 अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होची सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रो गोटे पार्ट तापर देखंतु 8 नंबर कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द कौन कह जाए नर्व सेंटर कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द नर्व सेंटर तापर देखंतु 9 नंबर C in CPU denotes CPU रो C टा कौन बोल पचारुची तार फुल फॉर्म कौन CPU माने होची सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो उत्तर होबो 9 रो 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तापर देखंतु सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU in a computer consists of the central processing unit CPU in a computer consists of देखो उत्तर होची 3 कौन लिखा 3 रे कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स तापर देखो 11 नंबर a group of bits that tells the computer to perform a specific operation is known as 11 नंबर उत्तर होची एक इंस्ट्रक्शन कोड यार उत्तर होची इंस्ट्रक्शन कोड आपण माने याको खाता रे नोट करंतु जा फल रे मन रहियो भल से मन रहियो तापर देखंतु 12 नंबर द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड ए कौन बोली कह जाए यार उत्तर होची एक बस बस बोली कह जाए कम्युनिकेशन लाइन CPU मेमोरी एंड पेरिफेरल्स भितर कौन कह जाए बस कह जाए तापर देखो 13 नंबर द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज कौन एटा हूँ इंटेल 4004 तापर देखो 14 नंबर मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली with the CPU is called memory unit that communicates directly with the CPU is called the register कौन बोल कह जाए register where does computer add and compare data यार उत्तर होची CPU chip where does computer add and compare data और उत्तर होची CPU chip तापर देखंतु 16 नंबर the control unit controls other units by generating the control unit controls
अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग। यार उत्तर होची कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स। तापर देखंतु पाइपलाइन स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। एटा होची इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। 18 नंबर रे कोन when machine instructions are being executed by a computer the instruction phase followed by the execution phase is referred to as। एर उत्तर होची इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल। तापर देखंतु 19 नंबर CPU can directly understand this language। क्यों लैंग्वेज CPU बुझी पारे? यार उत्तर होची मशीन लैंग्वेज। CPU टा मशीन लैंग्वेज बुझे। तापर देखंतु 20 नंबर which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU। which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU। यार उत्तर होची इंटरनल मेमोरी। कौन 2 इंटरनल मेमोरी। तापर देखंतु 21 नंबर। 21 नंबर कौन द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेचड फ्रॉम कैच मेमोरी। कैच मेमोरी। The main circuit board of the system unit is। the main circuit board of the system unit is motherboard। the main circuit board of the system unit is motherboard। 3 number following are the names of motherboards except। कंप्यूटर बोर्ड बोली कहा जाए मदरबोर्ड को। बाकी मदरबोर्ड को सब मध्य कहा जाए किंतु कंप्यूटर बोर्ड बोली कहा जाए। तापर 23 नंबर सरला। तापर 24 नंबर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। The type of input include all of these। input माने होची डाटा कमांड्स प्रोग्राम्स यूजर रेस्पॉन्स। इनपुट रे इंक्लूड हो तो ये सब हो। तापर 26 CPU stands for। CPU stands for कौन उत्तर होची 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 27 नंबर The basic goal of computer process is to convert the data into उत्तर होची information। The basic goal of computer process is to convert the data। डाटा को कौड़ी कन्वर्ट करिवो ना इनफॉरमेशन रे। तापर 28 नंबर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल सेक्शंस हैव स्पेशल पर्पज लोकेशंस कॉल्ड। यार उत्तर होची 1 नंबर रजिस्टर्स। तार देखो 29 नंबर डैश सेलेक्ट्स इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस इन ए CPU। यार उत्तर होची कंट्रोल यूनिट। तापर देखो
CPU retrieves its data and instruction from उत्तर होची 3 मेन मेमोरी। 31 नंबर देखंतु द वर्ड डाटा इज डिराइव्ड फ्रॉम केउ भाषार डाटा वर्डटा आछि यार उत्तर होची 4 लैटिन वर्ड। तापर देखंतु 32 नंबर डैश इज द रॉ फैक्ट्स फ्रॉम व्हिच डैश इज डिराइव्ड। ए 32 नंबर उत्तर होची 1 डाटा इज रॉ फैक्ट्स फ्रॉम व्हिच इनफॉरमेशन इज डिराइव्ड। एटा गत वर्ष क्वेश्चन आस्थिला एग्जाम रे। तापर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो 33 नंबर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन बाय। यार उत्तर होची सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। तापर देखो 34 नंबर द सिस्टम यूनिट उत्तर होची 2 इज द कंटेनर दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तापर देखो 35 नंबर डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। 35 नंबर उत्तर होची 4 एग्जीक्यूटिंग। तापर देखो 36 नंबर दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। 36 नंबर उत्तर होची 3 सीपीयू। 37 नंबर देखो पिक द वन दैट इज यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजन सच एज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। एटा कौन 37 होची 1 एटा होची एएलयू। तापर देखो 38 नंबर द डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मेकानिजम्स। यार उत्तर होची एएलयू। तापर देखो 39 नंबर CPU comprises of control unit, memory unit and desk unit। यार उत्तर होची अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। 40 नंबर which of the following memory chips is programmed during the manufacturing process। यार उत्तर होची रोम। और देखो which of the following components is the most essential for the computer system to work। एटा होची सीपीयू। तापर 42 नंबर ए डेस्क डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन which is sent to the CPU। और उत्तर होची 1 इनपुट। तापर देखो which of the following controls the machine cycle। 1 control unit। which of the following executes the computer commands। both 1 and 2 arithmetic unit logic unit। तापर the machine cycle includes all of these fetch decode execute store all of these। ALU is arithmetic logic unit। देखंतु मु आपण मानकु आई पूरा पाठर जतकी क्वेश्चन अछि मु आपण को एटा प्रिपेयर करेलनी तो आपण माने एगो बारंबार देखंतु वीडियो जा फल आपण अनेटा मन रखि पारिबे। मु जते पाठ अछि सबुर एमिति शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करिवि आपण मान सब को भलो भार पढंतु। एई पाठ जाक सब सरला परे एमसीक्यू रो जो प्रैक्टिस सेट अछि सेटा मध्ये मु आपण मान को प्रिपेयर करैबि।
आपण मैंने मो सब वीडियो को देखंतु आपण मैंने किसी शिखंतु आ एग्जाम क्वालिफाई करंतु। धन्यवाद। वेलकम टू झाड़ेश्वर एजुकेशन। आज आम कंप्यूटर थर्ड चैप्टर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस विषय रे पढ़िबा। तो मु पूर्व पाठ कंप्यूटर आर्किटेक्चर रे ए इनपुट एवं आउटपुट विषय रे बहुत किछि आलोचना करिछि। तो आपण माने जो माने फर्स्ट एवं सेकंड वीडियो देखि नांती कंप्यूटर से माने फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखि नंतु। आउ सेकंड वीडियो रे मु इनपुट एवं आउटपुट विषय रे बहुत भल भाव रे एक्सप्लेन करिछि। तो आपण माने सेकंड चैप्टर देखंतु। आज आम ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस रो चैप्टर रे यार पूरा डिटेल्स आलोचना करिया। देखंतु इनपुट माने होउची जहाँ माध्यम रे आमे डाटा एंट्री करिबा सेटा होउची इनपुट। एग्जांपल देखंतु माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन ए सब होउची इनपुट। स्कैनर मध्ये गोटे इनपुट। तो आउटपुट कोन? आउटपुट होउची जेउडा आमे रिजल्ट पाइबा। देखंतु आमे कीबोर्ड रे किछि जदी टाइपिंग करिबा ताले मॉनिटर रे सिरा देखा जिवो। तो सेटा होउची आउटपुट। तो मॉनिटर होउची गोटे आउटपुट। तापरे बॉक्स गोटे आउटपुट। बॉक्स रे गीतटा आवाज बाहरची तो सेटा भी गोटे आउटपुट। जेरॉक्स मशीन रे देखंतु किछि हार्ड कॉपी बाहरियो पेपर माध्यम रे तो जेरॉक्स मशीन भी होउची गोटे आउटपुट। तो आपण माने जानि परले इनपुट कोन और आउटपुट कोन। देखंतु मु केते इनपुट देखौची। फर्स्ट होउची कीबोर्ड। कीबोर्ड होउची गोटे इनपुट। देखंतु या माध्यम रे हमें डाटा एंट्री करि थाउ। कोन एटी कीबोर्ड जगह देखंतु गोटे कीबोर्ड रे कोन रहची देखंतु फंक्शन की जेते F1 F2 F3 सब लिखा हिथिबो एडा सब होची फंक्शन की। एडा सब होची फंक्शन की। तापर देखंतु ए 1 2 3 4 5 6 7 8 सब लिखा हिची एटा आ अल्फाबेट एगुड़ा को एटा होची अल्फा न्यूमेरिक की। आउ एटा सब होची कर्सर कंट्रोल कीज। आउ एटा होची न्यूमेरिक कीपैड। तो देखंतु ए लिखा हिची देखंतु। तापरे माउस। माउस होची गोटे इनपुट। माउस को देखि नियंतु एटा होची माउस। एटा ट्रैक बॉल। देखंतु ट्रैक बॉल भी होची गोटे इनपुट। एटा होची ट्रैक बॉल। तो देखंतु जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस। देखंतु तापर ए जॉयस्टिक होची एटा भी गोटे इनपुट। एटा होची जॉयस्टिक। एटा मध्ये गोटे इनपुट। तापर देखंतु लाइट पेन। ए लाइट पेन मध्ये होची गोटे इनपुट। तापर देखंतु टच स्क्रीन। ए टच स्क्रीन मध्ये होची गोटे इनपुट। इनपुट कोन खाली देखंतु देखंतु एटा गोटे इनपुट। डिजिटाइजर एंड ग्राफिक टैबलेट्स एटा भी होची गोटे इनपुट। बारकोड रीडर। देखंतु एटा बारकोड रीडर। ए बारकोड रीडर भी होची इनपुट। बारकोड जोंडा बारकोड को स्कैनिंग करे सेटा होची बारकोड रीडर। तापर देखंतु ए बारकोड को स्कैनिंग करी से डाटा काढंदी। तापर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर मध्ये होची गोटे इनपुट। देखंतु एटी ऑप्टिकल मार्क रीडर। एटी कोन हमर जो एग्जाम ही थाए आ एग्जाम केमती टाइप रो ना जोटा गोल ओएमआर रे जो गोल बुलाऊ से मार्कटा चेकिंग हुए एटी ऑप्टिकल मार्क रीडर रे। एटा मध्ये गोटे इनपुट। तापर देखंतु ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर।
एटा मध्य होची गोटे इनपुट ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर माध्यम कौन हुए टेलीफोन बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल इंश्योरेंस प्रीमियम ये सब हुए तापर स्मार्ट कार्ड रीडर एटा मध्य होची गोटे इनपुट देखंतु तापर बायोमेट्रिक सेंसर माने होची एटा अटेंडेंस उपयोग एटा यूज करा जाए एटा मध्य गोटे इनपुट तापर स्कैनर होची गोटे इनपुट तापर माइक्रोफोन कहवाई हम जोटा व्यवहार करूँ यहाँ हूँ इनपुट तापर देखो वेब कैमेरा मध्य हूँ गोटे इनपुट देखो यहाँ ये कैमेराटा हूँ इनपुट आउ यहाँ वेब कैमेरा यहाँ जो लगी हूँ इनपुट एतकी हूँ आमर इनपुट देखो तो माउस किए इन्वेंटेड करथिले से होचंती डगलस एंजल बर्ट माउस इन्वेंटेड करथिले एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन वर्तमान आमे आउटपुट विषय जानिबा देखंतु मु आउटपुट आपण मानको देखै दउची मॉनिटर होची गोटे आउटपुट तापर देखंतु मॉनिटर मध्ये होची कैथेड रे ट्यूब माने होची सीआरटी यार फुल फॉर्म आसीबारे या भल भाव पढ़ंतु सीआरटी माने कैथेड रे ट्यूब तापर देखंतु एलसीडी रो फुल फॉर्म होची लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एटा खाता नोट करंतु तापर देखंतु एलईडी रो फुल फॉर्म होची लिक्विड इमिटेड डियोड किंबा लाइट इमिटेड डियोड देखंतु एटा तो ये सब है आउटपुट तापर देखंतु आउट आउटपुट होची प्रिंटर भी दुई प्रकार अछि गोटे होची इंपैक्ट प्रिंटर आ गोटे होची नॉन इंपैक्ट प्रिंटर देखंतु द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन प्रिंटर स्पीड को केमती मपा जाए ना देखंतु कैरेक्टर्स पर सेकंड माने सीपीएस बा लाइन्स पर मिनिट एलपीएम एवं पेज पर मिनिट पीपीएम ए तीन टाइम पर देखंतु सीपीएस एलपीएम और पीपीएम यार फुल फॉर्म मध्य आसी पारे याको आपण माने खाता नोट करंतु सीपीएस माने होची कैरेक्टर्स पर सेकंड एलपीएम माने होची लाइन्स पर सेकंड ए सॉरी लाइन्स पर मिनिट एंड पीपीएम माने होची पेज पर मिनिट the faster the printing the more expensive the printer तब देखंतु प्रिंटर क्वालिटी दैट इज मेजर इन डॉट्स पर इंच डीपीआई प्रिंट क्वालिटी कौन कह जाए डीपीआई प्रिंट क्वालिटी को डीपीआई कह जाए प्रिंट क्वालिटी क्यों मपा जाए ना डीपीआई रे देखो प्रिंटर दुई बार विभक्त इंपैक्ट प्रिंटर आउ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो प्रथम आम जाना इंपैक्ट प्रिंटर को कौटा देखो मुझे देखी दूसरी डॉट मैट्रिक्स हूँ गोटे इंपैक्ट प्रिंटर तापर देखो डेजी व्हील यहाँ भी गोटे इंपैक्ट प्रिंटर तापर लाइन प्रिंटर यहाँ हूँ लाइन प्रिंटर यहाँ गोटे इंपैक्ट प्रिंटर तापर देखो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर देखो इंकजेट प्रिंटर हूँ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तापर थर्मल प्रिंटर तापर लेजर प्रिंटर आ गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर यहाँ सब हूँ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो वर्तमान बहुत जगह नॉन इंपैक्ट प्रिंटरटा व्यवहार करा जाउची तापर देखंतु आउटपुट प्लटर हूँ गोटे आउटपुट एग्जाम रे क्वेश्चन आसपारे प्लटर गोटे कौन तो आपण मैंने आंसर लिखिए आउटपुट तापर देखंतु स्पीकर हूँ गोटे आउटपुट
हेडफोन्स गोटे आउटपुट प्रोजेक्टर बोले सेटा हूँ गोटे आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट कौन कौन मुझे देखली। बर्तमान आम शॉर्ट क्वेश्चन आरंभ करवा आज एमसीक्यू बा शॉर्ट क्वेश्चन। तो फास्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। तो क्वेश्चन रे कौन कहला ना एतिकी मध्यरु हाई क्वालिटी आउटपुट के दिए। तो यार उत्तर होउची 2 नंबर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हाई क्वालिटी आउटपुट दे थाए। तापर देखंतु 2 नंबर द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। देखंतु यार उत्तर होबो बारकोड्स। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स जो प्रिंटेड लाइन थी मैं आपन देखी बारकोड एमती रही जो बारकोड एमती नथि कि प्रोडक्ट गुड़ा करे सेटा। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड बारकोड्स। तो उत्तर होबो एटा। देखो तापर 3 नंबर क्वेश्चन इन MICR C stands for। सी होजी सी माने कौन ये MICR रो सी माने कौन। तो तार उत्तर होजी 4 कैरेक्टर। MICR मान देखंतु मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो आपण मन को देखै थिले इनपुट देखैला बेले सेटा। तो सी रे होजी कैरेक्टर 4 नंबर। तापर देखंतु दी OCR recognize the dash of the characters with the help of light source। एटा कोडा उत्तर होबो ना सेफ। दी OCR recognize the shape of the characters with the help of light source। तो 4 नंबर उत्तर होजी सेफ। तापर देखंतु 5 नंबर स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ। उत्तर होची कैट्रिज यूज। और देखो 6 नंबर ए बारकोड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ। बारकोड रीडर गोटे कौन। तो उत्तर होची 3 इनपुट डिवाइस। तो एमती भाव क्वेश्चन आसो देखो मन रखु यहाँ ए बारकोड रीडर गोटे कौन। तो इनपुट डिवाइस। तापर देखो 7 नंबर व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमेरा। डिजिटल कैमेरा गोटे को प्रकार डिवाइस। तो यहाँ हूँ इनपुट 1 नंबर हम कहीं कैमेरा माध्यम आम फोटो काढ़ी था तो सेटा इनपुट करूँ तो सेटा हूँ इनपुट। तापर देखो 8 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। ए मध्यरु केउ गुडी को केवल इनपुट डिवाइस। तो देखो यहाँ हूँ उत्तर यहाँ 4 माउस कीबोर्ड स्कैनर ये सब हूँ इनपुट। देखो 9 नंबर क्वेश्चन द डैश में ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर। तेर उत्तर हूँ देखु डिस्प्ले। डिस्प्ले उत्तर हूँ डिस्प्ले। तापर देखो USB रिफर्स टू कौड़ा हबार उत्तर ए पोर्ट टाइप। USB कौन गोटे पोर्ट टाइप। तापर 11 नंबर देखो 11 नंबर कौन ए joystick is primarily used to or for। a joystick is primarily used to उत्तर हो एटा कंप्यूटर गेमिंग। तार 12 नंबर देखंतु लेजर प्रिंटर्स बिलोंग्स टू उत्तर होची
पेज प्रिंटर उत्तर कौन पेज प्रिंटर। तापर देखंतु व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स। कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन्स केउ प्रकार डिवाइस। तो उत्तर होची 5 आउटपुट। कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन होची आउटपुट। तापर देखंतु 14 नंबर दी OCR इज यूज फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ। OCR कौन पे व्यवहार करा जाउची मु आपन मन कहितली OCR टा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इंश्योरेंस प्रीमियम टेलीफोन बिल्स ए सब पई OCR यूज करा जाए। तार उत्तर हबो ऑल ऑफ द एभव। उत्तर हबो ऑल ऑफ द एभव। तार देखंतु 15 नंबर व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर प्रिंटर। कंप्यूटर प्रिंटर रा केउ प्रकार डिवाइस। तो यहाँ हम आउटपुट। कंप्यूटर डिवाइस होची सॉरी कंप्यूटर प्रिंटर होची आउटपुट। तापर देखंतु डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर। तापर देखंतु 17 नंबर व्हाट आर द यूनिट्स यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। तार उत्तर हम 2 DPI। व्हाट आर द यूनिट्स यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर। उत्तर होची DPI। तापर देखंतु 18 नंबर व्हिच ऑफ दिस इज ए पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस। व्हिच ऑफ दिस इज ए पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस। तो यार उत्तर होची एक माउस। माउस होची पॉइंटिंग आउ ड्रॉप डिवाइस। तापर देखंतु 19 नंबर पॉइंटिंग डिवाइस इनक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। 19 नंबर कौन हो उत्तर 4 सब होची पॉइंटिंग डिवाइस कीबोर्ड को छाड़ी की। तापर देखंतु 20 नंबर टू मूव टू दी बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस दी डैश की। और उत्तर होची 3 होम। टू मूव टू दी बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस डैश की होम की। ए हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर ऑन ए। उत्तर होची ऑल ऑफ दीज। ए हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर ऑन ए लाइन प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्लॉटर टाइपराइटर टर्मिनल ये सब उठी हार्ड कॉपी बाहर। हार्ड कॉपी माने जो जेरेक्स हो जेकोन से प्रिंट करूँ सेटा यहाँ हूँ हार्ड कॉपी। तो सब प्रिंटर रे बाहर तेणु ऑल ऑफ दीज। तापर देखो 22 नंबर ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज बाय ए। एक नंबर आर उत्तर होची प्रिंटर। ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज बाय ए प्रिंटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। एतकी मध्य केवटा आउटपुट डिवाइस नुहे। तार उत्तर होची स्कैनर। स्कैनर गोटे आउटपुट डिवाइस नुहे एटा होची इनपुट। तापर 24 नंबर ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ। उत्तर होची आउटपुट। ड्रम प्रिंटर गोटे कौन आउटपुट। तापर देखंतु 25 नंबर एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर्स कीबोर्ड्स एंड मॉडेम्स आर नोन एज कौन। आर उत्तर होची फेरिफेराल्स। उत्तर कौन फेरिफेराल्स। एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम्स ये सब कौन कह जाए फेरिफेराल्स बोली कह जाए। तार देखंतु 26 नंबर the higher the resolution of a monitor the कौन हम देखो 4 closer together the pixels the higher the resolution of a monitor the
closer together the pixels. देखो the CRT is dash in shape और उत्तर होगा rectangular in shape. और देखो which key is used in combination with another key to perform a specific task. और उत्तर होगी HRE control. तापर 29 नंबर you can use the tab key to indent a paragraph. You can use the tab key to indent a paragraph. तापर देखो 30 नंबर the impact printers are उत्तर होजी both 1 and 2 dot matrix और drum इटा होजी impact printer. In laser printers printing is achieved by deflecting laser beam onto dash surface of a drum. यार उत्तर होची 2 फोटो सेंसिटिव. तार देखंतु 32 नंबर resolution of a laser printer is specified in terms of 32 नंबर कौन 1 DPI. तापर 33 नंबर the output device make it possible to और उत्तर होची 1 view or print data. और देखंतु a pixel is a picture element or dot on a screen. A pixel is a picture element or dot on a screen. तापर देखंतु 35 नंबर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज बायो डायरेक्शनल. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज बायो डायरेक्शनल. तापर 36 नंबर द रेट एट व्हिच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन ए CRT इज कॉल्ड. और उत्तर कौन हो 1 रिफ्रेश रेट. तापर 37 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर. कोडा हार्डवेयर नुहे. उत्तर होची इंटरप्रिटर गोटे हार्डवेयर नुहे. और देखो 38 नंबर एन एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल्स इक्विपमेंट इज. पेरिफेरल इक्विपमेंट कोडा होची प्रिंटर होची पेरिफेरल इक्विपमेंट. तापर देखो 39 नंबर a device that makes copies and reproduce text and images is called. उत्तर होगा 3 प्रिंटर टा कॉपी काढ़े और टेक्स्ट इमेज ये सब काढ़े. तापर 40 नंबर ट्रैकबॉल इज एन एग्जांपल ऑफ. ट्रैकबॉल गोटे कौन ट्रैकबॉल होची पॉइंटिंग डिवाइस. तापर देखंतु व्हिच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस. उत्तर होची 2 टेल टुवर्ड्स द यूजर. तापर देखंतु तापर 42 नंबर फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय डगलस एंजलबर्ट. First computer mouse was built by Douglas Engelbart. Which of the following is not a hardware? Java. Which of the following is not a hardware? Java. तापर देखंतु the transfer of data from a CPU to peripheral device of a computer is achieved through input output port. और देखो 45 नंबर डेस्क प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट ए टाइम. यार उत्तर होची डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट ए टाइम.
और देखो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट और उत्तर होची 4 प्रिंटर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट प्रिंटर। 12 number the dash key will launch the start button window the window key will launch the start button। और देखो 48 number space bar is used for giving space space bar is used for giving space। तो एतिकी आमर इनपुट एंड आउटपुट कॉन्सेप्ट सरला मु अपन शॉर्ट क्वेश्चन पूरा देखली आपण माने गोटे खाता पेन धरिकी ए क्वेश्चन आ आंसर सब नोट करंतु एगुड़ाक एग्जाम आसबार बहुत चांसेस अच्छी। आज आमर कंप्यूटर रो 3rd नंबर पाठ सरला तो आपण माने भिडियो पूरा देखंतु खातार नोट करंतु आग को मु आपण मानकु आ गोटे चैप्टर पढ़ेबी। वेलकम टू झाड़ेश्वर एजुकेशन। आज आम कंप्यूटर रो 4th चैप्टर कंप्यूटर मेमोरी विषय पढ़ा। देखंतु मु आपण मानकु ऑल गवर्नमेंट एग्जाम लगी प्रिपेयर करोची तो मु जति क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करेबी एथिरु बहुत गुड़े क्वेश्चन आसीपारे तेणु आपण माने भल भाव प्रिपेयर हुंतु। देखंतु शॉर्ट क्वेश्चन मु आरंभ करूची। यही कंप्यूटर शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाक आपण मानकु सबू एग्जाम पाई दरकार पड़िबो तो वीडियो को पूरा देखंतु। फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु USB refers to आर उत्तर होची 3 ए पोर्ट टाइप। तापर देखंतु DVD refers to यार उत्तर होची 3 डिजिटल वीडियो डिस्क तापर देखंतु ए निवेल इज इक्वल टू डैश बिट्स उत्तर होची 4 नंबर 4 ए निवेल इज इक्वल टू 4 बिट्स। तापर देखंतु ए बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड डैश तार उत्तर होची एटा उत्तर होची 255। तापर देखंतु 5 नंबर द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू उत्तर होची 1024 मेगाबाइट्स। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। तापर देखंतु द टेक्निक दैट एक्सटेंड्स स्टोरेज कैपेसिटीज of main memory beyond the actual size of the main memory is called आर उत्तर होची virtual storage। तापर देखंतु 7 नंबर फ्लैश इज हार्डवेयर एटा हबो हार्डवेयर। तापर देखंतु which of the following can hold maximum data किए होल्ड करि पारे यार उत्तर होची 4 मैग्नेटिक टेप। which storage device is mounted on reels उत्तर होची मैग्नेटिक टेप। which of the following memory chip is faster के मेमोरी चिप फास्टर और उत्तर होची
एस राम हूँ फास्टेर। 10 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टेर। एटा हूँ एस राम। तापर देखु ए डिस्क कंटेंट दैट इज recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user। एटा हूँ उत्तर हूँ रीड ओनली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। उत्तर हूँ एक डिजिटल versatile disk। Cache and main memory will not be able to hold their contents when the power is off. They are volatile। এটা যে volatile। The term refers to data storage systems that make it possible for a computer or electronic device to store and retrieve data। এটা হচ্ছে 4 storage technology। तापर देखु डेथ इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। उत्तर हूँ फॉर्मेटिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसएस मोड। उत्तर हूँ कंटिन्यूस। The dash directory is mandatory for every disk। root। 18 number frequently SS information is held in cache memory। The primary device that a computer uses to store information is hard drive। A removable magnetic disk that holds information is floppy disk। Computer memory is normally measured in megabyte। Computer memory is normally measured in megabyte। In order to reproduce sound, a compact disc CD audio player uses a laser beam। The CD-ROM drive is used to play compact discs। Full form of MB is megabyte। Information stored in RAM need to be refreshed periodically। Memory is made up of large number of cells। Floppy disks are organized as tracks and sector। The storage device used to compensate for the difference in rates of flow of data from one device to another is termed as। और उत्तर होची बफर। 29 number unit of storage capacity is bit। Which of the following is not a ROM? EDPROM। ROM 3टा अच्छी PROM, EPROM, EEPROM। Dash is the ability of a device to jump directly to the requested data। 31 number आंसर होची 2 random access। The dash is the amount of data that is storage device can move from the storage to the computer per second। उत्तर होची डाटा
ट्रांसफर रेट उत्तर हूँ डाटा ट्रांसफर रेट। तो देखो virtual memory is an illusion of extremely large main memory. Dynamic RAM consumes less power and less than the static RAM. Dynamic RAM consumes less power and slower than static RAM. Slower than static RAM. Magnetic tape is not practical for applications where data must be quickly recalled because tape is a sequential access medium। और देखो both the ALU and control section have special purpose storage locations called देखो यार उत्तर होची registers। The capacity of 3.5 inch floppy disk is उत्तर होची 1.44 MB। तब देखो where are programs and data to be used by the computer available 38 रो उत्तर होची ना दिन storage। तब देखो 39 the difference between memory and storage is that memory is dash and storage is 39 रो देखो उत्तर होगा एक temporary permanent। The difference between memory and storage is dash store sorry एटा होची temporary। Which of the following is the magnetic storage device? Hard disk. Disk acts as a temporary high-speed holding area between the memory and the CPU, thereby improving processing capabilities। और उत्तर होची cache memory। Storage that retains its data after the power is turned off is referred to as उत्तर होची non volatile storage। Which of the following are advantages of CD-ROM as storage media? और उत्तर होची all of the above। Which of the following has the smallest storage capacity? उत्तर होची floppy disk। The computer abbreviation KB usually means kilobyte। The term bit is short for binary digit। 1 megabyte is equal to 1024 KB। This is the smallest memory measurement unit bit। The highest unit of information computer can understand and process is known as GOVT। 1101 series of 4 bits or binary digit is known as nibble। The size of any word number in a computer is measured in bits। A nibble is equal to dash bits 32 bits। Kilobyte equals to how many bytes? 1024 bytes। Which of the following represents 1 billion characters? Gigabyte। A byte is a collection of
8 bits. Which of the following statements is valid? 1 MB equal to 1024 kilobytes. Which of the following is the smallest measure of storage? Byte. How many bytes are there in 1 gigabyte? 10 to the power 9 bytes. The prefix kilo refers to approximately 100. A collection of 8 binary digits 0 or 1 in a string format is known as bit. तो बर्तमान आमर शॉर्ट क्वेश्चन सरला ए 4th यूनिट रो देखंतु आपण माने बही धरिकी पढ़ा अपेक्षा भिडियो जदि एमती देखिले आपण देखि पारुथिबे आ सुनी पारुथिबे ता द्वारा शीघ्र मन रही तो वीडियो को आपण माने पूरा देखंतु आ नेक्स्ट वीडियो पई अपेक्षा करंतु नेक्स्ट वीडियो अति शीघ्र आसीजिवो नेक्स्ट मु 5th नंबर चैप्टर आपण मानको प्रोवाइड करिवि धन्यवाद। वेलकम टू झाड़ेश्वर एजुकेशन। आज आम कंप्यूटर रो 5th चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय रे पढ़िबा। मु आपण मानको अधिक डिस्कशन करू नाही काहेकि ना बहुत डिस्कशन कले पिला मान भी बोरिंग हो जाउचंती तेणु मु डायरेक्ट आपण मानको एमसीक्यू बा शॉर्ट क्वेश्चन आरंभ करूची। तो जस्ट खाली हिंट्स देवी सॉफ्टवेयर को केते विभक्त करा जायची। देखो सॉफ्टवेयर को दुई भाग विभक्त करा जायची सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर। देखंतु तापरे देखंतु सिस्टम सॉफ्टवेयर को दुई भाग विभक्त करा जायची सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। तापर देखंतु एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को मध्य दुई भाग विभक्त करा जायची जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रे दुई भाग विभक्त करा जायची सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम रे देखंतु ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स सिस्टम यूटिलिटी अछि और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर रे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर लिंकर लोडर। तापर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर देखंतु जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर अंडर आछि वर्ड प्रोसेसर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट इमेज एडिटर माने एमएस वर्ड एमएस पावर पॉइंट एमएस एक्सेल ए सब और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर आछि रिजर्वेशन सिस्टम अटेंडेंस सिस्टम बिलिंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड जनरेटर इटीसी। तो बर्तमान आम शॉर्ट क्वेश्चन आरंभ करिबा। देखंतु आज रो फर्स्ट क्वेश्चन द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। यार उत्तर होबो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। तापर देखंतु 2 नंबर व्हाट डज सीओ स्टैंड्स इन कबल। सीओ रो फुल फॉर्म कोन एर अर्थ तार उत्तर होउची 2 कॉमन। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द एर उत्तर होउची 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। तापर देखंतु 4 नंबर द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज। यार उत्तर होउची टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर जोड़ा अछि आर फंक्शन एटा कोन करिवो असेंबली लैंग्वेज रु मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करिवो। Each model of a computer has a unique एर उत्तर होउची 2 मशीन लैंग्वेज। तापर देखंतु 6 नंबर द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इनेबल ए यूजर टू इंटरैक्ट विथ ए कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पज आर नोन एज।
उत्तर होची applications. The operating system is the most common type of desk software. System software. Which among the following is or are interpreted language? उत्तर होची both 3 and 4. Java and Visual Basic. A normal compiler takes source code as input and produce this as output. तो होची object code. An assembler is. Assembler माने कौन देखो तार उत्तर होची machine dependent. A linker program माने होची आर उत्तर होची एटा links the program with other programs needed for its execution. तो देखो 12 नंबर. Which of the following system software resides in main memory always? उत्तर होची एटा loader. तो देखो the program is used to convert mnemonic code to machine code. उत्तर होची assembler. A set of rules for telling the computer what operations to perform is called a. उत्तर होची एटा programming language. Which language is CPU dependent? उत्तर होची 4 all except Java. Java को छाड़ी की सब जगह. Languages which can easily interact with the hardware or are called low level language. Machine language. उत्तर होची ऑल ऑफ दीज. ये सब जगह हो. 18 नंबर देखो असेंबली लैंग्वेज और उत्तर होची एटा यूजेज अल्फाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर्स यूज इन मशीन लैंग्वेज. तो देखो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज ऑन इंटरनेट इज. उत्तर होची जावा. A computer program used for business application is. उत्तर होची COBOL. The language which can be relocated easily is. उत्तर होची 2 assembly language. तब देखो which of the following is not a computer language. केउटा कंप्यूटर लैंग्वेज नुहे. उत्तर होची एटा मीडियम लेवल लैंग्वेज. 23 translator program used in assembly language is called assembler. A desk program is one that is ready to run and does not need to be altered in any way. उत्तर होची executable. Java is an example of. उत्तर होची high level language. तार देखो 26 This is a cross between human language and a programming language. उत्तर होची एको पेसिव्ड कोड. तब देखो 27 नंबर
Which of the following is a programming language for creating special programs like apples? यार उत्तर होची एक जाभा। तापर देखंतु 28 नंबर कंप्यूटर लैंग्वेज यूज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन इज उत्तर होची 2 फॉर्ट्रन। द लैंग्वेज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स इज उत्तर होची यार 3 जाभा। 30 नंबर देखंतु which of the following is not true in context of Fortran? यार उत्तर होची 2 it is one of the oldest high level language। तापर 31 which of the following is not characteristics of COBOL? यार उत्तर होची 2 it is a very efficient in terms of coding and execution। तापर देखो 32 नंबर ए फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ ए सोर्स लैंग्वेज इज उत्तर होजी प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी विथ अदर सॉफ्टवेयर। तापर देखो 33 नंबर ऑल कंप्यूटर्स एग्जीक्यूट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स। 34 these are words that a programming language has set aside for its own use। उत्तर होची रिजर्व वर्ड्स। देखो लिस्प इज डिजाइन्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे इन क्यों मसीह 1972 मसीह। देखो C++ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय उत्तर होची देखो इनाडा 38 नंबर मेन एप्लीकेशन एरिया ऑफ अल्गोल इज उत्तर होची साइंटिफिक। डेस इज ए स्ट्रिंग ओरिएंटेड उत्तरटा होची कोबल। तापर देखंतु हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर देयर उत्तर होची 2। dash in program reporting some statements is usually called उत्तर होची लूपिंग। तापर देखो 42 नंबर असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। which of the following is not true about an assembler? It translates the C program। तापर देखो Fortran stands for formula translation। software refers to programs। तापर देखो 46 नंबर compiler is the translator of source program to be object code। तापर देखो 47 नंबर programs designed to perform specific tasks related to managing computer resources are called application software। तापर देखो 48 नंबर this type of software works with end users application software and computer hardware to handle the majority of technical details। उत्तर होची
सिस्टम सॉफ्टवेयर। A desk converts and executes one statement at a time. Interpreter। तापर देखंतु 50 नंबर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर। उत्तर होची परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर्स। देखंतु 51 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। उत्तर होची कंपाइलर्स। तारे 52 नंबर it is the set of programs that enables your computer's hardware device and application software to work together। उत्तर होची सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो तार उत्तर होची 5 helps the computer manage internal resources। एतिकी होची कंप्यूटर रो 5th चैप्टर। मु समस्त क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन कर देजी। आपण माने एतिकी क्वेश्चन भी देखंतु एही चैप्टर रो गोटे कि दुईटा मध्ये क्वेश्चन आसी पारे। धन्यवाद। वेलकम टू झाड़ेश्वर एजुकेशन। आज आमे कंप्यूटर रो 6th चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम बा ओएस विषय रे पढ़िबा। यार शॉर्ट क्वेश्चन बा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिबा। जेउ माने पूर्वरु पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 देखि नांती से माने से वीडियो गुडी को देखि नियंतु। चलंतु आज रो आरंभ करिबा शॉर्ट क्वेश्चन बा एमसीक्यू। देखंतु एक नंबर होची इट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। यार उत्तर होची ऑपरेटिंग सिस्टम। तावर देखंतु 2 नंबर द प्राइमरी पर्पज ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज। उत्तर होची 4 टू मेक कंप्यूटर्स इजियर टू यूज। आपण मान को मु एई पाठ गुडाक पीडीएफ रे दे देबी। आपण माने पढ़ी की एक क्वेश्चन आंसर ता देखिले आपण बुझी परिबे। 3 नंबर देखंतु द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 or more programs by multiple processor is। उत्तर होजी मल्टी प्रोसेसिंग। और देखो 4 नंबर इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन ए कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स ऑफ। उत्तर होजी 2। तावर देखो 5 नंबर it shares characteristics with both hardware and software। एर उत्तर होजी ऑपरेटिंग सिस्टम। BIOS स्टैंड फॉर। यार सठिक उत्तर होजी एटा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तापर देखंतु 7 नंबर which one of the following DOS commands sends contents of the screen to an output device। उत्तर होजी 2 डिस्क कॉपी। तापर देखंतु 8 नंबर which of the following operating systems is also known as single user operating system। एर उत्तर होजी DOS। DOS होजी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तापर देखंतु the main difference between Windows and DOS is ability to multitasking। तापर देखंतु 10 नंबर
which process checks to ensure the components of the computer are operating and connected properly? उत्तर होची एक बुटिंग। तापर देखंतु 11 नंबर मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स मल्टी प्रोसेसिंग माने कौन? उत्तर होची एटा टू और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स विथ इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। तापर देखंतु which of the following is the main programs of MS DOS? एर उत्तर होची boot record. Linux is a type of desk software. उत्तर होची 4 open source software. Which of the following is not an operating system? उत्तर होची 5 CP by M। तापर देखंतु 15 नंबर the operating system is the most common type of desk software होजी system software। In MS DOS which of the following commands is used to delete directory with all subdirectories and files? एर उत्तर होची डिलीटरी। तापर देखंतु 17 नंबर इन डॉस द लेवल कमांड इज यूज्ड टू both 1 and 2 create the level of disk and change the level of disk। तापर देखंतु which command is used to delete file from a directory in DOS? उत्तर होची del। देखंतु ग्रेटर देन सिंबल इन DOS command is used to उत्तर होची redirect output। Which of the following is not an external command of DOS? उत्तर होची CLS। Which of the following is not a usual file extension in DOS? एटा which file in MS DOS contains internal commands that are loaded during booting process? उत्तर होची bios.sys। What is the name of the batch file that is automatically run when MS DOS is booted? यार उत्तर होची auto exec.bat। तापर देखंतु 24 नंबर which type of commands in MS DOS needs external files to perform their action? 24 नंबर होची 2 external commands। तापर देखंतु 25 नंबर the scan disk program is used to scan disk and eliminate virus। तापर देखंतु 26 नंबर DOS stand for disk operating system। Which of the following is not an internal command of DOS? यार उत्तर होची 3 format। Dash is a feature for scheduling and multi-programming to provide an economical interactive system of 2 or more users। Time sharing a command in DOS used to set name to disk is level। Which of the following is a function of operating system? यार उत्तर होची all of these।
The word processor used by DOS to write the programs or instruction is word star. An operating system is A or N system software. In DOS, the dir command is used to display list of files and subdirectories. Which one of the following is an MS-DOS external commands? एहर उत्तर होजी फॉर्मेट. DOS operating system does not have a virtual memory. तावर देखो 36 number. MS-DOS is usually supplied on a hard disk. A program in execution is called process. Which of the following commercial software products are examples of operating system software and application software respectively? यार उत्तर होबो Microsoft Windows XP and Microsoft Word. तावर देखो 39 number. Memory utilization factor shall be computed as memory in use or total memory connected. Fork is the creation of a new process. Which one of the following is not the function of operating system? उत्तर होची networking. The kernel is this user threads unaware of. तावर देखो real time systems must have preemptive kernels. 44 number. The process of transferring data intended for a peripheral device into a disk so that it can be transferred to peripheral at a more convenient time or in bulk is known as spooling. तावर देखो when a file contains instruction that can be carried out by the computer it is often called a dash file. एर उत्तर होजी executable. Grouping and processing all of a firm's transactions at one time is called batch processing. एतिकी होची ऑपरेटिंग सिस्टम बा ओएस रो एमसीक्यू बा शॉर्ट क्वेश्चन. मु जेते गुडे चैप्टर आपण मानकू प्रोवाइड करूची एथुरी क्वेश्चन आसीबो बहुत गुडे क्वेश्चन आसीबो आपण मान थोरे देखि नियंतु. धन्यवाद. वेलकम टू झाड़ेश्वर एजुकेशन. आज आम कंप्यूटर 7th चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विषय पढ़ा. यार एमसीक्यू बा शॉर्ट क्वेश्चन मु आपण मानकू प्रोवाइड करी. देखंतु जेते सब एग्जाम होची गवर्नमेंट एग्जाम ओएसएससी एसएससी आरआई अमीन एवं आगकू हेबाकू जाउथिबा स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वे एग्जाम पाई मध्य यही कंप्यूटर क्वेश्चन जाक बहुत इंपोर्टेंट अटे. मु आपण मानकू ऑल चैप्टर रो ऑल क्वेश्चन एंड आंसर प्रोवाइड करूची. तो आपण माने ध्यान सहित पढ़ंतु एथिरो ही क्वेश्चन आसीबो. चलंतु आरंभ करिवा आज रही एमसीक्यू क्वेश्चन. देखंतु आज रो फर्स्ट क्वेश्चन आरंभ करिवा. एक नंबर क्वेश्चन होची
बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन इज नॉन एज आर उत्तर हम 3 डेस्कटॉप तापर देखो 2 नंबर व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर यार उत्तर हूँ 5 ए फाइल मैनेजर 3 नंबर देखु एक्टिव विंडोज मीन्स दी यार उत्तर हूँ सॉरी both 1 and 2 active window is designed by a different color toolbar that other open window then is currently open 3 number answer हम both 1 and 2 तापर देखंतु 4 नंबर Windows stores all systems settings in this file उत्तर होची win.ini 5 नंबर factor making विंडोज पॉपुलर इज एटा हूँ यार उत्तर हूँ 3 यूजर फ्रेंडली तापर देखो 6 नंबर इन विंडोज एमी व्हाट डज एमी स्टैंड फॉर मिलेनियम एडिशन देखो यही चैप्टरटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे यार बहुत गुड़ा क्वेश्चन आसीपे कहीं गत थर विंडोज रु बहुत गुड़ा क्वेश्चन आसाला तो आपण मैंने यही चैप्टर को भल कि देखूँ यही चैप्टर तापर जो नेक्स्ट चैप्टर आसो MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सही क्वेश्चन जाक भी बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे यही दुईटी पाठ रु बहुत क्वेश्चन आसो तेणु यही दुईटा पाठ को मिस करूँ ना यही दुईटा चैप्टर टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज तो यार उत्तर हूँ 5 कंट्रोल अल्टरनेट प्लस डेल यार उत्तर तापर देखो 8 नंबर इट इज इजियर टू चेंज द नेम ऑफ फाइल यूजिंग डेस प्रोसेस यार उत्तर हूँ रीनेमिंग 9 नंबर डेस में बी इंक्लूड इन अदर फोल्डर व्हाइल मेकिंग हियरार्चिकल स्ट्रक्चर फोल्डर यार उत्तर हूँ सब फोल्डर Which of the following refers to the rectangular area for displaying information and running programs? यार उत्तर हूँ विंडो 11 नंबर टाइटल बार रिबन स्टेटस बार व्यूज एंड डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस आर कंपोनेंट्स ऑफ डेस प्रोग्राम यहाँ हूँ विंडोज प्रोग्राम 1 नंबर और देखो 12 नंबर a symbol or question on the screen that prompts you to take action and tell the computer what to do next यही क्वेश्चन टा गोटे वर्ष आसाला देखु यार आंसर हूँ 4 prompt and dialog box 13 नंबर when you install a new program on your computer it is typically added to the menu यार उत्तर हूँ 1 all programs तार देखो 14 नंबर द नेम गिवन टू ए डॉक्यूमेंट बाय द यूजर कॉल्ड एरा हूँ उत्तर फाइल नेम देखो 15 नंबर ए स्मॉल फिगर व्हिच डिपिक्ट्स सम एप्लिकेशन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड यहाँ हूँ उत्तर हूँ 4 आइकन स्मॉल फिगर जो स्क्रीन रे थी को आइकन कहुए 16 नंबर देखो all the deletes file go to 1 recycle bin तापर देखो 17 नंबर when you want to move an icon on your desktop this is called यहाँ हूँ ड्रैगिंग देखो यही जगह गोटे फाइल अच्छी यही जगह एमती माउस धरिकी एमती टाणिकी ने तो ये आसो से कहुए ड्रैगिंग तो सहीटा हूँ यही क्वेश्चन 18 नंबर N desk contains programs that can be selected और उत्तर हूँ 3 आइकन 19 नंबर फाइल extensions are used in order to identify the file type 20 नंबर देखो to shrink a window to an icon यहाँ हूँ उत्तर हूँ मिनिमाइज ए विंडो
21 नंबर which of the following is appropriate method to shut down computer यार उत्तर होची एक क्लिक स्टार्ट देन सेलेक्ट शट डाउन। तापर देखो 22 नंबर फाइल्स आर ऑर्गेनाइज आफ्टर स्टोरिंग इन यार उत्तर होची फोल्डर्स। A desk is an icon on the desktop that provides a user with immediate access to a program or file यार उत्तर होची शॉर्टकट। तापर देखो 24 नंबर डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट उत्तर होची टास्क बार। डेट एंड टाइम जाक सब तले थी टास्क बार रे। देखो 25 नंबर द डेस्कटॉप ऑफ ए कंप्यूटर रिफर्स टू एटा होची एक नंबर द विजिबल स्क्रीन। तापर देखो टू मैक्सिमाइज ए विंडो मीन्स टू एक्सपांड इट टू फिट द डेस्कटॉप। तापर 26 नंबर इफ यू चेंज विंडोज 98 टू विंडोज एक्सपी यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग अपग्रेड। तापर यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स इन माय डॉक्यूमेंट उत्तर होची माय डॉक्यूमेंट। देखो तापर एंड मेनू इज अवेलेबल एट व्हिच बटन उत्तर होची स्टार्ट बटन। 30 नंबर देखो इन विंडोज एंट्री स्टैंड्स फॉर उत्तर होची न्यू टेक्नोलॉजी। तापर देखो 31 नंबर विंडोज एक्सपी रिलीज इन उत्तर होची 4/2001। विंडोज 95 98 एंड विंडोज एनटी आर नोन एज व्हाट यहाँ हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो मु आपण मानकु ए विंडोज चैप्टर रो सब क्वेश्चन प्रिपेयर करैली आपण माने पूरा पढ़ंतु या धन्यवाद। वेलकम टू झाड़ेश्वर एजुकेशन। आज आम कंप्यूटर रो चैप्टर नंबर 8 पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यही चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट हम आपण मानक पई कहीं एग्जाम रे यही चैप्टर रु प्राय तो 80% क्वेश्चन आसीबो कहीं यही चैप्टर रे एमएस वर्ड एमएस एक्सेल एवं एमएस पावर पॉइंट यही तीनटा मिक्स होगी अच्छी। तो यही चैप्टर आम मैंने एमएस वर्ड एमएस एक्सेल एवं एमएस पावर पॉइंट विषय में पढ़ा तार जिते सर्ट क्वेश्चन अच्छी मुझे प्रोवाइड करी। आपण मैंने यही चैप्टर को भल भाव में प्रैक्टिस करंतु। यही एमएस वर्ड एक्सेल एवं पावर पॉइंट रो जिते भी सर्टकट की अच्छी अन्य एक वीडियो माध्यम आपण को वीडियोटा प्रोवाइड करी। तो आपण मैंने यही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। देखंतु एक नंबर क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेवलप्ड बाय डेस इन उत्तर होची माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी 1980। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस ऑल ऑफ द अबव एमएस वर्ड एमएस एक्सेल एमएस पावर पॉइंट एमएस एसएस। एमएस वर्ड इज ए word processing software. What is MS Word? It is a document typing tool. Microsoft Office Word is a program included with Windows 2000 that can be used only to create or edit text files smaller than 64K that do not require formatting. उत्तर होची इटा a program which helps to create written documents and lets you go back and make corrections as necessary. उत्तर होची word processor. A word processor would be used best to type a story. This program is made by
Microsoft and embedded with Windows and used to view web document उत्तर होची MS Word. You can start Microsoft Word by using which button? उत्तर होची 2 start. When you start MS Word, the opening document has the name as document 1. What is the default file extension for all Word documents? उत्तर होची DOC. The first bar of MS Word is title bar. Editing a document that has been created means उत्तर होची correcting it. तापर देखंतु a dash is an additional set of commands that the computer displays after you make a selection from the main menu. Sub menu. Microsoft Word is a word processor developed by Microsoft. In MS Word, spelling check is a feature available in which tab? उत्तर होची 4 review. MS Word is a text or document editing application program that comes in the package of MS Office Suite. Which among the given options is not related with MS Word? उत्तर होची 2 antivirus. तापर देखंतु 17 नंबर. In order to choose the font for a sentence in a Word document, select font in the format menu. When computer users dash a document, they change its appearance. उत्तर होची 1 edit. In Word, the replace option is available on edit menu. Which of the following is not an option of edit menu? उत्तर होची page set off. Which bar is usually located below title bar that provides category option? उत्तर होची 1 menu bar. तापरे the process of making changes to an existing document is referred to as dash it. उत्तर होची editing. Most of the editing tools are available under which menu? Edit menu. To move to the beginning of a line of text, press the dash key. उत्तर होची home key. In which menu we will find the command document? उत्तर होची data. Which of the following is not a font style? उत्तर होची superscript. Portrait and landscapes are उत्तर होची page orientation. Which of the following should be used to move a paragraph from one place to another in a Word document? Cut and paste. To move the text from its original position to another position without deleting it is called? उत्तर होची copying. तापर देखंतु 30 नंबर. Which of the following displays the buttons for changing text style and alignment and size? उत्तर होची formatting toolbar. For printing a document, you have to put on echo printer. देखंतु 32 नंबर. To save an existing document with a different file name, click उत्तर होची 4 save as on the file menu. ए क्वेश्चन अर्थ देखंतु गोटे फाइल को आउ गोटे फाइल किंबा अन्य नेम रे सेव करबा चाहउछन्ती ताहेले आपण मानकू सेव एज करबा को पड़िबो.
तो देखो 33 नंबर insert date, format page number and insert auto text are buttons on the text toolbar. यार उत्तर होजी एक formatting toolbar. तापर देखंतु to increase the line spacing use the dash shortcut keys. यार उत्तर होजी 5 none of these एवं मध्य केही नुहे. 35 नंबर देखंतु Word has a list of predefined typing, spelling, capitalization and grammar errors that dash can defect and correct. आर उत्तर होची ऑटो स्पेल. तापर देखंतु 36 नंबर borders can be applied to. उत्तर होची all of these. सेल को बॉर्डर करि परिबा, पैराग्राफ को बॉर्डर करि परिबा, टेक्स्ट मध्ये बॉर्डर करि परिबा. तो 37 number which of the following characteristics is used to compute dynamically the results from excel data. एर उत्तर होची formula and function. 38 number देखंतु what is the default left margin in word document. एर उत्तर होची डिफॉल्ट कोड थिबो 1.15. तापर देखंतु in this chart only one data series can be plotted. एर उत्तर होची एक पाई चार्ट. तापर देखंतु 40 नंबर this chart shows the relationship of part to a whole. एर उत्तर होची stacked bar. 40 नंबर देखंतु this chart shows the relationship of part to a whole. एर उत्तर होची 3 stacked bar होची एरो उत्तर. देखंतु which of the following is not a font style. एर उत्तर होची सुपरस्क्रिप्ट. तापर देखंतु it is a software tool that lets one enter, calculate, manipulate set of numbers. एर उत्तर होची 2 स्प्रेडशीट. तापर देखंतु 40 नंबर it is a grid of cells made of horizontal and vertical columns. एर उत्तर होची एक worksheet. Group of worksheet is known by. उत्तर होची workbook. Which one is the example of spreadsheet package. एर उत्तर होची 4 snowball. तो देखंतु portrait and landscape are page orientation. 3 types of data can be entered in a worksheet: number or character, text and. और उत्तर होची all of these. To select the current column press. उत्तर होची Ctrl plus space bar. Scatter chart is also known as XY chart. और 50 नंबर the extension of saved in file in MS Excel is .xlsx. A cell entry can be edited in the cell or in the formula bar. और देखंतु in Microsoft PowerPoint 2 kinds of sound effect files can be added to the presentation are. उत्तर होची web files and mid files. A chart placed in a worksheet is called
embedded chart देखो 54 नंबर which file format can be added to a PowerPoint show यार उत्तर होगी all of these JPG GIV WAV तो देखो 55 नंबर the advantage of using a spreadsheet is all of these तो देखो 56 नंबर which of the following should you use if you want all the slides in the presentation to have the same look यार उत्तर होगी a presentation design template देखो the cell having bold boundary is called active यार उत्तर होगी 2 active तो देखो cell address F4 in a formula means it is an absolute cell reference और देखो which of the following is an active cell in Excel current cell और देखो 60 नंबर in Excel an active can be represented by A4 which option will we use to give heading in the form और उत्तर होगी एक level the maximum zoom percentage in MS PowerPoint is 400% in the content of animations what is a trigger और उत्तर होगी 2 an item on the slide that performs an action when click तब देखो 64 नंबर how are the data organized in a spreadsheet यार उत्तर होची 4 rows and columns which of the following views is the best view to use when setting transaction effect for all slides in presentation उत्तर होची एक स्लाइड सॉर्टर व्यू तब देखो 66 नंबर which command brings you to the first slide in your presentation यार उत्तर होची कंट्रोल प्लस होम 3 तब देखो 67 नंबर in order to include picture data type must be यार उत्तर होगी एक OLE और देखो 68 नंबर in Excel charts are created using which option एक होगी 68 chart wizard और देखो which of the following allow you to select more than one slide in a presentation यार उत्तर होगी 3 shift plus click each slide the basic unit of a worksheet into which you enter data in Excel is called a 2 cell और देखो you can create hyperlinks from the Excel workbook to उत्तर होगी 4 all of the above in Excel this is a pre-recorded formula that provides a shortcut for complex calculations उत्तर होगी 3 function तो देखो which of the following should be used to move a paragraph from one place to another in a Word document और उत्तर होगी cut and paste तब देखो in PowerPoint the header and footer button can be found on the insert tab in what group यार उत्तर होगी none of these और देखो 75 नंबर
A dash is an additional set of commands that the computer displays after you make a selection from the main menu. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସବ୍ ମେନୁ. In Excel, dash allows user to bring together copies of workbooks that other users gave worked on independently. ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି merging. Pressing Ctrl plus F9 in Excel, এটা হচ্ছে none of the above. Cell address A4 in a formula means it is a, আর উত্তর হচ্ছে ଏକ. Mixed cell reference. Pie charts are typically created by using which of the following? ଉତ୍ତର ହଉଛି spreadsheet software. और देखंतु which of the following justification align the text on both the sides left and right of margin. कौन कहे और उत्तर होची 2. Justify. What is the default size of the data type in MSSS? उत्तर होची 50. तो देखो 82 नंबर. To move the text from its original position to another position without deleting it is called copying. Attributes can be defined for entity. MS Excel is used for spreadsheet calculation. Equal to sum 61/610 is an example of formula. Dash shows how the contents on printed page will appear with margin, header and footer. और उत्तर होची पेज लेआउट. तो और देखंतु how many types of relationships are there in MSSS? उत्तर होची 3. A word processor would be used best to type a story. In order to choose the font for a sentence in a Word document, उत्तर होची select font in the format menu. और देखंतु the shortcut key to print document is, एर उत्तर होची Ctrl P. What is the extension of PowerPoint in Microsoft Office 2007? उत्तर होची .pptx. All of the following terms are related to spreadsheet software except, और उत्तर होची virus detection. There are a total of dash actions button in PowerPoint. उत्तर होची 12. Which of the following is a DBMS software? उत्तर होची SS. Which of the following displays the buttons for changing text styles, alignment and size? उत्तर होची formatting toolbar. Which of the following is not a term pertaining to Word? Slideshow. Which key on the keyboard can be used to view slideshow? उत्तर होची F5. PowerPoint provides dash number of layouts for use with blank presentation. 24 number of layouts. What is the shortcut key for centering the text selected by the user in Word? उत्तर होची Ctrl E. What does an electronic spreadsheet consist of? उत्तर होची all of these. आज आमर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रो
क्वेश्चन एंड आंसर प्रिपरेशन सरिला आपण माने यहाकू प्रैक्टिस करंतु एई चैप्टर रु 80% क्वेश्चन आसीबार बहुत चांसेस अछि। आपण पाखे जदि लैपटॉप किंबा डेस्कटॉप अछि ताहेले एमएस वर्ड एमएस एक्सेल एवं एमएस पावर पॉइंट प्रैक्टिस करंतु एवं एई चैप्टर टाकू थ्योरी माध्यम पढ़ंतु जा फल रे आपण माने बहुत क्वेश्चन आंसर करि परिबे एग्जाम रे। धन्यवाद।